Assalamu alaikum students. The topic that we are going to study today, and that is basics of grammar, the orientation of grammar. Students, ये जो topic है हमारा, the orientation of grammar, it is of high importance in that context, because if we want to know grammar, if we want to apply the rules of grammar, if we want to go through the all basics that are necessary for applying the rules, that topic is for you. जो ग्रामर है, याद रखिएगा, ये अपने कुछ बेसिक एसेट्स रखती है, कुछ बेसिक पॉइंट्स रखती है, जिनको जब तक ग्रैस्प ना किया जाए आप कभी भी एडवांस लेवल की ग्रामर तक नहीं जा सकते। तब तक आप किसी भी असेसमेंट टेस्ट जो होते हैं, जो मुख्तलिफ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, आप कभी भी उनके कैपेबल अपने आप को नहीं कर सकते। और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर्स दैट आर अवेलेबल इन द क्लासेस और दैट आर अवेलेबल on other internet sources. So basics are really important, and the topic of today is thoroughly in that context, and I highly recommend, Professor Muhammad Noman Faisal, I highly recommend to you people, before starting studying any lecture of grammar, before starting going through any rules of grammar or any book of grammar, you should go through the basics of grammar, the orientation of grammar. तो आज का ये टॉपिक जो है आपको पूरी जो ग्रामर है उसकी बेसिक्स देगा और आपको इस काबिल करेगा कि आप जो ग्रामर के कॉम्प्लेक्स और एडवांस रूल्स हैं उनको समझ सकें। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ग्रामर, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स ओरिएंटेशन ऑफ ग्रामर, उसको शुरू करते हैं। तो हमारे